Zubair Siran, an English instructor here in Hafiz Medical College. Today, the topic which I am going to teach you that's about Jinnah vision of Pakistan. So today in this lecture, I am going to teach about the Jinnah vision of Pakistan. So after going through this chapter, you will really come to know that what was his opinion in regard of Pakistan. For example, the newly established state, Qaid-e-Azam was thinking about there will be some rules, regulations, which every individual of the state must be aware of the things. So let's proceed forward as I have started the lesson and the remaining course now I am going to teach you. So if you have any question from the previous lesson, you may ask me at the end of the lecture. So let's begin. You are free to go to your temples. Here in this line, Qaid-e-Azam says that now you are free people. No one has right to interfere. That where are you going? Why you are going to temple? Why you are going to mosque? No one is having right of asking such kind of question. That was completely demolished after the independence of Pakistan. After that, he says, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques, or to any other place of worship in this state of Pakistan. अच्छा, तो कह रहा है कि अभी आप लोग आज़ाद हैं, चाहे आप जहाँ से भी बिलोंग करते, चाहे आपकी जो अकायद जो है, चाहे आपकी जो भी है, आप लोग क्या है, आज़ाद हैं. आप लोग क्या अपने मॉस्क, अपने टेम्पल्स, मंदिर आप लोग जा सकते हैं. उसके बाद फरमाता है जी, you may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. कह रहा है कि चाहे आपकी creed जो है, अकीदा जो है, चाहे आपकी जो कास्ट जो है, नस्ल जो है, जो भी है, गवर्नमेंट को, रियासत पाकिस्तान को इसके साथ कुछ भी या कोई भी लेना देना नहीं है. पाकिस्तान के लिए आप क्या है, एक शहरी हैं. पाकिस्तान के लिए आप एक शहरी हैं और nothing else. Now, I think we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in the course of time, Hindus would cease to be Hindus and Muslim would cease to be Muslim. This is a very important point he has shared. आप क्या कह रहे हैं? अब कह रहा है कि टाइम के साथ, the passage of time, आप लोग क्या होंगे? टाइम के साथ मुसलमान नहीं रहेगा और हिंदू नहीं रहेगा. यहाँ पर उसकी अकीदे की बात नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारी सोच की बात हो रही है कि हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा. मतलब ये कि अकीदा तो सेम रहेगा, लेकिन उनका जो सोच है, फॉर एग्जाम्पल ये हिंदू है, इसके साथ मुझे इस तरीके से ट्रीट करना है. नो, it will not be remain the same. इधर कैसे चाहता है क्या आप में इत्तेफाक आ जाएगी, तो इसका मतलब है जब इत्तेफाक आ जाए तो आप फिर ये नहीं सोचेंगे ये मुसलमान ये काफिर, नहीं, आप ये सोचेंगे कि हम क्या है, हम सारे एक ही शहरी हैं, हम सारे क्या है, पाकिस्तानी हैं. जी सर. Yes, sir. What is the meaning of cease? सीज मतलब तर्क करना, खत्म. कह रहे कि आप लोग क्या ये सोच जिसको आप लोग क्या कहेंगे, ये सोच ऑटोमेटिकली यहाँ से खत्म हो जाएगी. समझ आ रही है कि नहीं? Very good. Now let's proceed forward. Not in the religious sense, but that is the personal faith of each individual, but in the political sense as a citizen of the state. कह रहे कि ये नहीं कि मजहब की सेंस में नहीं, अकीदे के सेंस में नहीं, हालांकि क्या पॉलिटिकल सेंस में. पॉलिटिकल सेंस में आप क्या मुसलमान और काफिर ये बातें क्या होंगे, खत्म होंगे. Understand? Yes, sir. Very great. Well, gentlemen, I do not wish to take up any more of your time, and thank you again for the honor you have done to me. Now, Mr. Qaid-e-Azam, he wanted to wind up his speech, and he says that I do not want to take much of your time. मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ, और मैं आप लोगों का दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे इज्जत दी. समझ आ रही है? Yes, sir. Very good. I shall always be guided by the principles of justice and fair play without any. कह रहा है जो rules regulations जो है,
जो हमें करना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो है, मैं हमेशा उनको क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। मैं हमेशा क्या, वो हमेशा मेरी क्या रहनुमाई करेंगे। समझ आ रही है ना? वेरी गुड। As is put in the political language, prejudice or ill will, in other words, कह रहा है कि पॉलिटिकल असल में जो तासुबात जो है ना, तासुबात, प्रेजुडिस मतलब क्या, तासुबात, इल विल मतलब क्या, बड़ी ख्वाहिश है। और ये जो एक देखो फॉर एग्जांपल इस तरह होता है ना कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, ये इस तरह कहा जाता है उनके बारे में कि वो क्या करते हैं, अपने जाती मफादात के लिए, अपने जाती कुछ कमाने के लिए करप्शन करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो इल विल जो है ना, ये बड़ी ख्वाहिशें वगैरह ये नहीं होंगे। और ये जो प्रेजुडिस जो है, तासुबात जो है, ये भी क्या होंगे, खत्म होंगे। और जो रूल्स वगैरह जो है वो हमेशा क्या मेरी रहनुमाई करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। Yes, sir. वेरी गुड। पार्शियली और फेवरेटिज्म, और ये जो फेवरेटिज्म जो है ये भी क्या हो जाएगी, खत्म। इसका हिस्सा नहीं पार्शियल होनी चाहिए, हिस्सा नहीं होना चाहिए। And I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. कह रहा है कि आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की जो डिवोशन जो होगी फ्यूचर में, उसको मद्देनजर रखे मैं पाकिस्तान को एक ग्रेटेस्ट नेशन में क्या कहता हूँ, शुमार करता हूँ। और मैं ये बिलीव रखता हूँ कि वो क्या होंगे फ्यूचर में, आगे जाके पाकिस्तान क्या होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का क्या होगा, ग्रेटेस्ट नेशन में से